We're taking you now to news coming in from Maharashtra. The state has set up a panel named the Caste, Interfaith Marriage Family Coordination Committee, state level, to gather detailed information about couples in such marriages, in interfaith marriages, and maternal families of the women involved if they are estranged. This is according to a government resolution that was issued on Tuesday. Now, I do want to tell you, the committee is said to be headed by the state's Women and Child Development Minister and BJP leader Mangal Prabhat Lodha. It'll also oversee the district-level initiatives for women in such marriages who may be estranged from their maternal families, so that, and this is according to the statement that has been provided by the government, that it will then help those women who are estranged from their maternal families with assistance, so that they can be provided with assistance and resolutions can be arrived at. बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र सरकार ने, आपने जैसे कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था, पैनल बनाया है इंटरफेथ मैरिजेस के लिए। तो इस पैनल के बारे में कृपया हमें जानकारी दें, क्या डिटेल्स होंगे? साधारणतः ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे या बच्ची अपने परिवार के खिलाफ में शादी करते हैं, अंतरजातीय अंतरधर्मीय, तो उसके बाद में कई जगह तो सहमति से होता है और कई जगह आपस में संबंध पूरे टूट जाते हैं। माँ बाप बच्ची को कह देते हैं तुम हमारे लिए अब नहीं रही, और बच्ची भी कहती है कि तुम मेरे लिए माँ बाप नहीं रहे। इसके बाद में जिसके साथ शादी करके वो जाते हैं, उनको ये थोड़े दिनों के बाद समझ में आ जाता है कि मेरे अलावा इसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, परिवार से पूरी कट ऑफ है। ऐसे केसेस में क्या होता है, वो श्रद्धा वालकर के समय अपन ने देखा है कि 6 महीने तक वो जिंदा है कि मर गई है, उसके घर वालों को भी नहीं पता और किसको भी नहीं पता। तो ये घटनाएं नहीं हो और ऐसी होने के बाद में उनके परिवार से उनके संबंध बने रहें, इसके लिए हम एक हेल्पलाइन शुरू करेंगे। ये समिति हेल्पलाइन शुरू करेगी और इसमें यदि हेल्पलाइन में कोई भी हमारे से इस बारे में जानकारी या मदद मांगेगा तो हम इसमें उनको मदद करेंगे। महिला बाल विकास का एक काम है, इसके लिए हमने ये काम शुरू किया। लोधा जी, इस पैनल के बारे में हमें जानकारी दीजिए। आप इसके अध्यक्ष रहेंगे, बाकी मेंबर्स कितने और कौन रहेंगे? इसमें ऐसा है कि जो भी महिला बाल विकास मंत्री रहेगा वो इसका अध्यक्ष रहेगा। महिला बाल विकास मंत्रालय के जो प्रमुख सचिव है वो इसकी प्रमुख सचिव रहेंगी। और अभी अपन ने शुरुआत में इसको स्टेट लेवल पे लिया है, तो 9 से 10 लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और जिन्होंने इस विषय में जिन्होंने इंटरेस्ट बताया कि हम इसमें समय दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी कोई इसमें किसी को मानदंड कुछ नहीं मिलेगा और इसलिए जिन्होंने लिया उनको अपन ने लिया है। जरूरत पड़ने पर इसमें नंबर भी बढ़ाया जा सकता है और इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और उप समितियां गठित की जा सकती है। इसका काम कब से शुरू होगा? टर्म शुरू हो गया, जीआर इश्यू होने के बाद में इसका टर्म शुरू हो गया। आज से इसका टर्म शुरू। और काम भी अभी से शुरू हो गया है? हाँ, काम शुरू हो गया आज से। और ये हेल्पलाइन कब लॉन्च होगी? हेल्पलाइन इसको हम अगले 15 दिनों में लॉन्च कर देंगे। जी, लोधा जी, CNN News 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Okay, let's go over to our Mumbai Bureau Chief Vinay Deshpande, who you saw conducting that conversation. Vinay, let me just remind our audiences, a few weeks ago we saw the case of Shraddha Walkar, in which she and her partner were living together. They were estranged from both of their families, she much more from her own family. Then there were reports that she had been murdered, except that the police only came to know about 6 months after that murder actually took place. Now, Vinay, I want to understand from you, the Maharashtra government is saying that to prevent incidents like that from happening again, they've created this task force. One of the hopes of the task force is to create coordination and communication between the elopers and the family that they elope from, to create conversation and prevent incidents like this from happening. Vinay, I want to understand from you, though, the fear that experts may raise is that such a task force could also be used for the purpose of surveillance, particularly with interfaith marriages being such a touchy topic in parts of the country right now. Could you bring us more context? Well, yes, as the minister put it out, the reason for formation of such a panel is that after Shraddha Walkar's father met the Deputy Chief Minister, the government felt that some measures should be taken in order to build bridges, in order to hold communications and make sure that in case of interfaith marriages where communication lines have completely broken down, there should be some way of, keeping track. And that is why this panel has been formed. Now, whether this will lead to tracking of such couples
whether it will lead to any issues that the couple might feel is infringing on their privacy, is something that we will have to see as the panel functions, because it is something that is unprecedented in that sense in Maharashtra to have seen such a panel. So as of now, one cannot predict how this will take shape, or, after parents approach the helpline or after children approach the helpline, what is the kind of support that the state government plans to give in this issue. All these things one will have to wait and watch in order to understand how exactly the panel envisages to function. But what is most important is that a helpline will now be started within a fortnight, which will be available, which will be accessible to people across the state, through which help can be sought from the government when it comes to any such cases. And the government indicates that any complaints or any calls coming on these helplines will be taken quite seriously. So in that sense, the government functioning with respect to panel will possibly go hand in hand with the helpline that will be formed, where people will be able to call upon the helpline, seek help. Thereafter, the government panel kicks into action. Vinaya, thank you for